babes, तो मैं तैयार हो रही हूँ हमारी फर्स्ट ब्लॉगर मीट पे जाने के लिए। लवीना तो बहुत जा चुकी है एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लविश्का। आई एम मनीष्का फ्रॉम लविश्का। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज कर लो। वी पुट आउट सम अमेजिंग कंटेंट. Okay, so without further ado, let's get started because I'm running short of time. Come on. So मैं अपना OOTD बाद में रिवील करने वाली हूँ. First of all, मैं अपना स्किन प्रेप कर रही हूँ with this Dot & Key का विटामिन सी वाला मॉइस्चराइजर. You can see मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, but I like it. It's great. It's great for summers because it is super light, hydrating, and it definitely treats some dark spots, which is very necessary. So while this gets absorbed by my skin, I'm going to turn on my straightener. Turn on और मैं turn on करके रख दूँगी ताकि थोड़ा heat. It's quick absorbing, देख रहे हो भी गया. अब मैं लगा रही हूँ ये ही Dot & Key विटामिन सी रेंज का सनस्क्रीन. It's again super light. If you are someone जिसको बहुत ज़्यादा चिपकू हैवी चीज़ें नहीं पसंद है, you are going to like this विटामिन सी वाला रेंज from Dot & Key. और हम बाहर धूप में जा रहे हैं, so anyway मैं सनस्क्रीन स्किप नहीं करती हूँ. आपको भी नहीं करना चाहिए. 3 finger rule याद है ना? But this is थोड़ा सेरमी टेक्सचर, तो मैं ऐसे अपने बैक ऑफ हैंड पे लगा के निकाल के लगाती हूँ. That's done. अभी लिप्स पे मॉइस्चराइजर लगाना चाहती हूँ. क्लासिक वैसलीन हाइड्रेशन. ओके, दिस इज Base of Glory Pore Minimizing Primer by Shimmers. It's great for keeping your base intact. I don't use it all over my face. I just use it on my nose, which gets super oily and shiny. Also some on my forehead, like the basic T-zone, you guys. Wherever I get sweaty, you know. इसको होने देते हैं सेट, तब तक हम फाउंडेशन चूज कर लेते हैं. मुझे लगता है फाउंडेशन के लिए मैं अपना क्लासिक कल्ट फेवरेट मेबलिन का फिट मी ही ले रही हूँ. I forgot to correct my discoloration with a corrector, and so I'm using this Bellora Paris का छोटू mini corrector, and I just take it on my nail, place it wherever I have that bit of discoloration. Now don't be like me and don't forget your correctors before your foundation. Okay, ठीक है. corrector जैसे तैसे मैंने जल्दी लगा दिया है. I don't know. Let's go in with the foundation. I go in with my hands, you guys. हाथ से भी सुंदर तरीके से अप्लाई हो ही जाता है. I go nose पे वेरी थोड़ा, like बहुत कम लगाती हूँ मैं इस पे. And also on forehead I go with a very little product, like ना बराबर ही जाती हूँ. I don't know what problem do I have with my forehead, but I don't apply a lot of foundation there. My base is not yet done because I have to, you know, deal with my dark circles. इतनी सीरीज देखिए, proof थोड़ा ना बचना चाहिए. Sugar concealer. बस वहीं जहाँ मुझे थोड़ा करेक्शन की ज़रूरत है. मेक श्योर कि आप अपनी अंडर आइज एंड में ब्लेंड करो. फेस पे डायमेंशन वापस लाने के लिए आई एम यूजिंग दिस कॉन्टूर एंड हाईलाइट स्टिक फ्रॉम ब्लू हेवन. डबल चिन का पूरा बंदोबस्त हो जाता है इससे. ये जो खा के जो इतनी डबल चिन आई है ना, इससे सब हट जाता है. I just blend everything with my fingers. पहले you form a line with this third finger and then you just tap. You see that chiseled look? So okay, setting के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ Fit Me का cult favorite Fit Me powder in the shade 25 medium. Yes. जो कि आज मैंने बिल्कुल भी नहीं यूज किया पाउडर के लिए, तो I'm going to use it and I'm going to smooth it on my back of the hand and then go. क्रीजेस थोड़े मिटा लेनी चाहिए बिफोर सेटिंग. इसके अंदर है ना थोड़ी सी कलर करेक्टिंग टिंट है जिससे बेस ग्रे नहीं होता, विच आई अप्रिशिएट. पर इससे हाईलाइटिंग इफेक्ट भी चला जाता है. तो पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं, बट you know what I mean.
Here is my blush brush, and I'm using this palette from Sugar, and I'm using the blush, matte blush, to bring back the color. Eyes के लिए I'm not going to go anything like very bold, something like that. मैं क्या करूँगी, अपनी bronzer palette में से एक fluffy brush के through this fluffy blending brush, and I will go with this contour shade right here. थोड़ा सा बस लेके टैप करके अपने आईज पे एकदम थोड़ा सा कलर ला दूंगी. देखो कितना डिफरेंस लग रहा होगा ना, मस्त थोड़ा डिफाइन लग. So beauties, here's the hack. मैंने transition shade को use कर लिया है for defining my brows too. चलो काजल लगा लेते हैं. Let's use this lash of the Titan's volumizing mascara from Sugar. With a brown eyeshadow. थोड़ा सा shape बिगड़ गया है, so let's fix that. Line my lips. Done with my lipstick. Let's comb my hair a tad bit. And बेटा वो नखरे तेरे सहेंगी तब जब वो तेरे बाप हुए. some free advice and dialogues my father make when I'm getting late. Yes, I Too know. much late. Too much late. Done with my straightening. Let's get jeweled. I got this fantastic ring from my mommy's jewelry store. Yes. Okay. See? Some more rings, especially minimal rings. I'm a fan, legit fan of minimal rings. Earrings, these are again from my mommy's store. A huge shout out on Instagram page, Ahmedabad Jewelry. If you want these earrings, you can contact our team. My trendy earrings are on. And now let's move on to shoes. Gumboots. One last step, body sunscreen. I don't want to get tanned, you guys. I should have applied it before rings, no. I never go anywhere without my favorite perfume, which is from Villain, Hydra perfume. And also you have to smell good when you meet new people, okay? Guys, so I have reached to the location. 1, 2, 3 and boom. Ta-da.
must say that this property is extremely hygienic and clean, and obviously the food is Chummeshwari. You guys have to come here if you are from, especially you are from Gujarat, तो यहाँ तो आना ही बनता है. Okay, so let's go. हाय पीप्स, तो मैं पहुंच चुकी हूँ ऑनेस्ट. मैंने यहाँ पे अपना व्हीकल पार्क किया था. इट वॉज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया. सो हियर आई एंड माई व्लॉग. अगर अच्छा लगा हो, मज़ा आया व्लॉग देखकर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़. इट्स फ्री. ओके बाय.